Welcome everyone. It's great to see you all here. कुछ लोग पिछले हफ्ते वाले भी मुझे नजर आ रहे हैं, पिछले सेशन वाले भी. I believe there are some new people as well. So please do let me know where are you from. आप इस वक्त कहाँ से connected हैं? If you can just mention it in chat, that would be great. Somebody had mentioned can't hear you, probably because I was not speaking. So Farzana from New York, Sayed from Karachi, Hasnain from Karachi, Muhammad from Lahore, Karachi, Sara from Islamabad. Okay. Karachi. Okay, Mumtaz from Bhavalpur. Then from Lahore. आप लोगों की जो मैसेजेस हैं मेरे पास डायरेक्टली आ रहे हैं. जस्ट मोमेंट, प्रॉब्ली मुझे कुछ सेटिंग करने की जरूरत है. ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं, मुझे इन टेक्निकल चीज़ों का कोई खास ना शौक है ना कभी मैंने इनको बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करी. गुजारे के लिए काम करते हैं. ओके. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है ज़िंदगी में मेरे ख्याल में, ये कि जो चीज़ें आपके एरिया की नहीं है उन पे खामखाई में हाथ ना डालें. सो हमारा आज का जो सेशन है, सो फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, वेलकम. गुजरावाला, वेलकम. एंड Karachi, Lahore, Coach Khan. Okay. So, it's like हमारा आज की जो session है, this is I'll be sharing some of the distinctions with you. कुछ coaches, when you're working as a coach, it's like when you're a people helper, there are certain things, certain very common mistakes I see a lot of coaches making. Even people who have trained with me, जब नए नए होते हैं उसका अंदाजा नहीं होता, they do make those mistakes and it's perfectly okay. We are all humans. Even if I'm telling you something, या आपको मैं कोई चीज teach कर रहा हूँ, that doesn't mean कि मैंने वो mistake नहीं की. I am just as human as anyone else. मैंने 25 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारी ट्रायल एंड एरर से चीजें सीखी हैं और मैंने उसमें काफी सारी जिंदगी में अपनी गलतियां भी की हैं. सो वी हैव अनम फ्रॉम साउथ कोरिया. Can you all hear me? मेरे पास जुल्करनैन का मैसेज यहाँ पर आया. I can't hear you. Can you hear me? Please type yes if you can. Okay, जुल्करनैन, इसका मतलब है कि अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, then others are getting it. So there is something in your setting. आपको probably volume बढ़ाने की जरूरत है. And as I always say, क्योंकि चंद लोगों के यहाँ पे कैमरे ऑन है, if you are a coach and if you want to be a coach, the first thing you must do is practice showing up. If you're hiding behind a camera, forget about making any name in this field. Okay, I'm telling you very honest, straight truth. Okay, you must practice showing up. So turn your cameras on if you really, and I'm talking to men. ठीक है, I understand खवातीन पर्दा करती हैं. I'm not asking any woman. बट मर्द हो यार, कम से कम मर्द बनो. कैमरे के सामने तो आने की हिम्मत करो. अगर तुम्हारे अंदर कैमरे के आगे आने की हिम्मत नहीं है, तुम समझते हो दुनिया फतह करोगे. इट्स लाइक दुनिया चेंज करने निकले बट कैमरे के सामने नहीं आ सकते. ओके, हाउ विल दैट वर्क? आई जस्ट डोंट गेट दिस. हम तलवार के बजाय बल्लों से दुनिया फतह करते हैं ना, तो शायद इस वजह से कैमरे के, बट बल्ले वालों को भी कैमरे के सामने आना पड़ता है. Turn your cameras on, man. So because it's like it's like just speaking to a computer, तो कुछ मजा नहीं आता. तुसी जी खर्च करवाओगे. ये खर्चा तो वैसे ही हो रहा है ना सईद. आप खुद सोचो ना, जिंदगी यहाँ पे खर्च हुए जा रही है, पता नहीं चल रहा. पिछले एक हफ्ता हमारा देखो कैसे गुजर गया. साल देखो अभी स्टार्ट हुआ था. ओके, चंद दिन पहले, जस्ट इफ थिंक अबाउट दिस, चंद दिन पहले हम कह रहे थे यार 2020 गुजरे, ये कोविड से जान छूटे 2000, और एज इफ 2020 के साथ कोविड भी चला जाएगा. 2021 आ गया, 2021 भी गुजर गया, 2022 भी 3/4 गुजर चुका है. Just think about this, how fast time really passes and we don't realize this. हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम इस गलत फहमी में होते हैं कि बस अब नहीं, इंशाल्लाह फिर करेंगे.
ओके, किसी ने किताब लिखी थी बहुत साल पहले, हमारे पाकिस्तान के ऊपर किसी गोरी ने किताब लिखी थी, हमें बड़ी बुरी लगी थी, बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा था। उस किताब का जो बेसिक वो टाइटल था, द नेशन हु डिपेंड्स ऑन इंशाल्लाह। वो उस जमाने में हमारे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब होते थे, वो हर काम में उनको जब नहीं करना होता तो वो ही यूज्ड टू से इंशाल्लाह। ओके, हम हर काम को अल्लाह पे टाल देते हैं और अपने हिस्से का काम करते नहीं। बहरहाल, so a lot of times people who start in coaching, they make some mistakes. And one of those mistakes is they do not understand what their role is. Okay. How many of you here, by the way, are coaches? Okay. I want you to type one if you are already a coach. And if you want to become a coach, you are not yet a coach, but you want to become one, I want you to type two. Okay. So I see several ones and several twos. So those people who are coaches, who are already doing coaching, उनका एक प्रॉब्लम और होता है। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। ओके, एंड फ्री वाले तो आ जाते हैं लोग, मगर जो बात आती है हम चाहते हैं कि प्रोफेशनली करें, तो वो पैसों वाले क्लाइंट्स नहीं मिलते। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, देयर इज अ रीजन। ओके, एंड आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ दोस थिंग्स विद यू। ओके, मुझे 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एंड I see a lot of people struggling in spite of the fact कि जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम एक साथ लोगों से, इतने सारे लोगों से एट अ टाइम कनेक्ट हो सके बगैर लंबा चौड़ा कोई खर्चा किए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह I have survived, not just survived, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह I've thrived in my profession. And I've seen a lot of people कि जो स्टार्ट करते हैं within a year or two they are out. So there must be some reason, there must be some mistakes that those people are making. This is a big industry. इसमें बहुत लोग आ रहे हैं। अमेरिका में it's considered one of the fastest growing industry in terms of like services जो लोग provide करते हैं। Everyone the it's the इस coaching के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात ये है, इसमें आना बहुत आसान है। और इसमें आने की, बिकॉज ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, तो इसमें सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स लाइक बेसिकली कहीं से भी आपने किया हुआ, यू स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्फ अ सर्टिफाइड कोच एंड यू बिकम अ कोच। बिकॉज अगर आप थेरेपी कर रहे हो अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पे अगर आप थेरेपिस्ट अपने आप कह रहे हैं, देन यू नीड सम लाइसेंसिंग, सम कोई सर्टिफिकेशन प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। लेकिन कोचिंग के लिए एनीवन कैन बिकम अ कोच। सो फॉर एग्जांपल, अब कोई शख्स है, फर्ज करो कि वो 20 साल से अपनी दुकान चला रहा है एंड ही हैज बीन सक्सेसफुल अपनी दुकान में, और उसने 1 से 4 दुकानें बना ली हैं। मिसाल के तौर पाकिस्तान के अंदर इम्तियाज स्टोर बड़ा मशहूर है। सो अब वो बोले कि जी ठीक है, आई वांट टू बी अ बिजनेस कोच फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट ग्रोसरी स्टोर और अ सुपरमार्केट। So based on his experience, he can do that. Okay, he doesn't need any certification on that. लेकिन जब हम लाइफ कोचिंग की बात करते हैं, लाइफ कोचिंग में भी आना इसी तरह से कोई भी आ सकता है, बट देर आर सर्टन थिंग्स। मैंने अपने पिछले सेशन में कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, वो अभी भी मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन चेक दैट ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड वहां पे आपको उसकी सारी इट्स लाइक जो पिछले सेशन है वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है। गो चेक दैट। ओके, मैं I'll not repeat those things जो हमने पिछले सेशन में की थी, लेकिन उसमें एक चीज जिसका मैंने जिक्र किया था, दैट्स अबाउट माइंडसेट। ओके, मेरी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमारा पहला महीना जो होता है, दैट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग योर माइंडसेट। बिकॉज आपके पास स्किल्स हो, आपने कोई कोर्स करके स्किल्स सीख ली, बट माइंडसेट ही नहीं है आपका। माइंडसेट एक दिन में डेवलप नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क दैट वे। It requires mind consistently. How many times, by the way, do you find जिंदगी में जनरली कि आप किसी काम को बड़े शौक से स्टार्ट करते हैं एंड जब आप करना शुरू करते हैं और लिटरली समटाइम्स थोड़ी देर में जहन कहीं और जाने शुरू हो जाता है, विद इन फ्यू मिनट्स यू फाइंड दिमाग जो है किसी और चीज में लगने लगता है। आपने एक किताब उठाकर देखना शुरू करी या कोई वीडियो देखना शुरू करी, अभी थोड़ी देर में ख्याल आई यूट्यूब के ऊपर कोई और आई, एंड यू स्टार्ट गोइंग इनटू दैट। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दैट?
Yes, Gigi, very often. Me, yes, I do. Very often, many times. These are the comments that I'm reading here that, it's like, आप लोग just think about this. कोई काम हम करना चाहते हैं और चंद घंटे में हमारा जहन इधर उधर हो जाता है. तो ये जो माइंड सेट है इसको डेवलप करने में, इट डजंट हैपन इन अ डे, इट टेक्स टाइम. सो इट्स लाइक जो मेरी कोचिंग की ट्रेनिंग होती है उसमें हमारा एक महीना जो है इट्स ऑल स्पेंट ऑन टाइम. इवन देन वो कंप्लीट डेवलप नहीं होता. इट टेक्स सम एफर्ट ऑन योर पार्ट एज वेल. I direct you, I keep hammering information in you, I keep directing you, I keep hammering you, the attitude in you. Yet you may find you have to do your part. सो अदरवाइज ये जो चीज होती है कि हमने कोई ट्रेनिंग कर ली और हमारे पास स्किल्स आ गए, हमें सारी ये टेक्निक पता है, वो टेक्निक पता है, कोचिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम शुरू करते हैं. अभी हमने 2 दिन आके फेसबुक पे कोई प्रोग्राम किया, कोई बात करी, एंड देन माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड. वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, यानी हम चंद मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो हमें अपने आप को चंद साल सस्टेन करना है. इमेजिन हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच इट विल टेक, हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी. And this is why every coach who's coaching needs a coach himself. How many of you who are already coaching people, work with a coach yourself? Type 1 if you work with a coach, and type 2 if you don't have a coach. So, and what I mean by coach is the kind of coaching, जो coaching आप बेचना चाह रहे हो, आपने वो coaching खुद खरीदी है. यू अंडरस्टैंड? सो आप चाह रहे हैं कि आपका 3 महीने का कोचिंग का पैकेज है जिसमें हर हफ्ते कोई आपके साथ आकर 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन ले, और उस सेशन में वो आपसे आके अपनी जिंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर काम करें, और उसके जो भी गोल्स इंस्पिरेशंस हैं वो उस पर आपके साथ काम करें, और 3 महीने तक ये सिलसिला जारी रहे. और उसके बाद फिर 3 महीने बाद वो दोबारा साइन अप करे, और फिर वो मजीद 3 महीने आपकी जो रिन्यू होता रहे. इस तरह से, do you have someone जिसके साथ you have that kind of connection that you pay them for like 3 months coaching yourself? Okay, type 1 if you have someone like that, type 2 if you don't, and it's perfectly okay. Because it's like, if we do not invest, if we are, if we are trying to sell something which we don't buy, it will be very difficult to sell that. Okay, so the first thing, if you are working as a coach, you must have a coach yourself. Okay, this could be a business coach, this could be a life coach, this could be a coach who helps you in overcoming whatever limitations you may be experiencing in your life, or a coach who may be helping you develop your skills, honing your skills, whatever it is that you need, whatever areas of your life you want to work on. You must have a coach yourself. If you don't have a coach and you are trying to sell coaching, I'm telling you, it's going to be very, very difficult, almost impossible. Okay, so a coach must have a coach himself or herself. A person who's coaching other people and does not have a coach will not be able to survive for very long. Okay, sometimes it's so that, and a lot of times, by the way, I see a lot of people think and treat coaching as if it's some kind of therapy thing. So they have an issue, and therapist में और coach में फर्क होता है. Therapist जो होता है, they look for the reasons for my problems and help me overcome my limitations, and is the boss, is the person who tells me what I should do or should not do. Coach, on the other hand, doesn't do that. Okay, coach, on the other hand, basically sees what I want to do and helps me overcome whatever limitations I have and move forward. So those of you who don't have a coach, my first recommendation is get a coach for yourself. Okay, get a coach, the kind of coach you want to be. It's like one of the questions I ask my students is, are you the kind of coach who you would want to work with?
If you are not the kind of coach that you want to work with, how can you ask someone else to hire you? And for you to be that kind of coach, आपको अपने आप पर काम करना होगा. Nobody is perfect. हम में से हर एक में बहुत बहुत जगह होती है इम्प्रूवमेंट. यानी इट्स लाइक हम जितना ज्यादा सीखते हैं, हमें इतना पता चलता है हमें कितना थोड़ा आता है, हमें कितना कम आता है. और उस चीज के लिए हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना पड़ता है. हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है. ओके हमें कॉन्स्टेंटली चीज़ों को, नई नई जो चीज़ें हो रही हैं, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड, उन चीज़ों में हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है. ये वो चीज़ नहीं है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में होती है. एंड दिस इज another mistake that a lot of people make. वो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है कि हमने एक डिग्री हासिल करने तक कोई कर लिया, उसके बाद डिग्री के बाद हमारा अगला स्टेप नौकरी होती है. इवन अगर आप उसमें भी जाते हैं तो आप देखेंगे वो लोग जिन्होंने फॉर एग्जांपल एमबीए किया, उसके बाद जॉब कर ली, बट उसके बाद दे हैव टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड एंड अपग्रेडेड बाय टेकिंग डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट प्रोग्राम्स, ताकि वो अपनी प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में वो आगे बढ़ते रहें. सेमिनार्स अटेंड कर रहे हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, कोर्सेज अटेंड कर रहे हो, दे हैव टू डू इट इफ दे वांट टू ग्रो. अदरवाइज इंसान जो है एक जगह पे आके स्टैग्नेंट हो जाता है. सो so sir, if you don't mind, please demonstrate either in English or Urdu if possible. We are confusing while communicating with our mind. I don't get this. Rizwanullah, आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं? And I'm communicating with your mind all the time. You may or may not know that. So here's a few things. Those of you who are new, coaching जो है, the way coaching works is, first let me just share with you coaching का जो हमारा जो structure होता है. This is what you will learn in detail in my class when you join my courses. This is what you will learn. चाहे मेरे जो pre-recorded programs हैं उनको आप join करें, या मेरे upcoming जो classes हैं आप उनको join करें. This is the structure of a session that you learn. और इसमें हर point जो मैं आपको साथ अभी share करने वाला हूँ उसमें बहुत detail है. Okay, so मेरी कल ही NLP 93rd NLP practitioner and master practitioner training मेरी कल खत्म हुई है. So उसमें we had a session जो मेरे NLP practitioner वाले थे उनको मैं कुछ coaching की चीजें करा रहा था, and it was also master practitioner. So मेरी जो slide है, it is from my master practitioner training. उसके ये slide है. So I'll not go into a lot of detail. अगर मैं खाली इस एक स्लाइड पे सेशन करूं, we'll need at least 8 hours for this. So, but I'll just quickly go and share some of the tip of the iceberg. So please bear with me. I'll try to explain each of these points as we go. So the first thing is, when you work with people, is to establish a human to human connection. Okay, NLP की ज़बान में इसको rapport कहते हैं. And this is generally कि जब आप when you meet a client for the first time, okay, you develop that connection. Now even before this, there is something that you need to do, and that is you need to prepare yourself. You need to be at your best when you're working with people. A lot of times कोचेस के साथ एक जो प्रॉब्लम होती है वो इस माइंड के साथ सेट के साथ काम कर रहे होते हैं, मेरी अपनी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ अपने रिलेशनशिप्स में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे फाइनेंसेस के इतने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बिजनेस के इतने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे फलाने प्रॉब्लम्स इतने हैं, सो लिहाजा मैं इस वजह से मैं आई कांट डू कोचिंग. Some people, because of that mindset, they stop coaching. Okay, that's one of the mindsets that must be changed. अभी इतना टाइम नहीं है. मैंने पिछले सेशन में इसका इन चीजों पे थोड़ा सा रोशनी डाली थी. If you are interested, check that video as well. It's on my YouTube channel, as I said. लेकिन but that's one of the things. So you need to prepare yourself first. You need to be at your best. You need to know how you can get at your best instantly. कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, कितने लोग हैं जिनके साथ इस तरह की चीज होती है कि आप सुबह उठे और आपने देखा बाहर बहुत अच्छा मौसम है. It's like your favorite kind of mausam, whatever that is.
And because itna acha mausam hai, you feel really good. How many of you had that experience? Type 1 if you've had that experience. And जब ये इस किस्म की जो चीज होती है, and even if you're watching on YouTube, you can still remember, you can always type 1 and 2. So I'm checking that as well. Okay. So जब इस किस्म की situation होती है, दिल चाहता है कि यार रोज ऐसा ही हुआ करे जिंदगी में, इट्स लाइक हर दिन ऐसा ही हो. Do you know what? When you are working with people, one of the key skills you need is ability to get into that frame of mind at will, instantly, irrespective of what's happening in your personal life. So you wake up in a day, it's a really bad weather. It's a really bad day for you for whatever reason. Okay? But you have an important meeting, a coaching session coming up. You cannot afford to have a bad weather and a bad mood and a bad state of mind spoil an important coaching session. So how many of you think it is worth learning this skill to change your mood instantly, to get into your peak performance state, your best state instantly? Type yes if you think it is worth learning. And if you think it's not worth learning, that's a choice as well. It's like, oh, it's okay. It's like, अगर किसी को ये समझता है कि मैं इस तरह के मूड के साथ आके किसी को कोचिंग करूंगा, जी फरमाइए, क्यों आए मेरे पास, कोचिंग चाहिए? ओके, फारिग समझा है आपने मुझको, पहले ही सुबह से दिमाग खराब हुआ है, अब आके मुझसे आप कोचिंग भी लेंगे? ओके, if you think that this is also a good idea, I have no problem. It's your business. So somebody is asking a question. So what if a person is unable to cope with his or her problems? So in this case, how will he, Sarish, get coaching? Get coaching for this. Okay. So it is human to have at least bad mood sometime. It is human to have bad mood every day. Okay, no problem at all. You don't become an animal if you have a good mood or a bad mood. A mood is a mood. It's also human to know how to shift and how to not let external events in your life influence your internal state, especially when you're working as a coach and you want to perform at your best. It's just because something is happening in my life. Think about this, by the way. जो आपके पास कोई client आ रहा है, he or she is paying you for your services. They have set time with you for your services. And they are investing their time or their money on you, with you. And agar first karo, even if it's a free session, now this is a potential client, but you are not really feeling good. You're feeling down for whatever reason. You're not in your best shape. Do you think that by not being in the best shape, you will be able to serve that client to the best of your ability and sell your coaching to that person? Will they say, हाँ यार ये इतना मूड खराब वाला है ना, ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था मैं जो बिल्कुल हर वक्त जो है ना मायूस सा हो, इसी कोच के पास काम करूँ, इसको जो है ना मुझे ऐसे ही चाहिए था. मतलब, do you think this is going to work? If you were a client and you go to a coach who's in a really bad mood for whatever reason, would you want to work with that coach? Would you want to spend your time and your money with that coach? What do you think? No, 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 not at all. Absolutely not. Okay. But still we expect some people,
ये भाई उसको क्लाइंट को ये रियलाइज करना चाहिए ना, भाई कोच है हम, मैं भी तो इंसान ही हूँ। आज उसको ठीक है, मैंने उससे पैसे भी ले लिए थे, लेकिन अब मेरी जिंदगी में भी तो मसाइल हैं, अब जरूरी तो नहीं है। None of that really matters. And that's the part of mindset. This is what I'm saying. So when you're learning, this is one of the key things. Okay. And even after learning this, it doesn't mean it's like now, for example, now a person knows how he or she can change his mindset. Now he knows how he can be at his or her best, but they have to practice it. Just knowing something doesn't mean that it will happen automatically. कितने लोग यहां पर मुसलमान हैं इस वक्त, right now? Okay. So alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yes, I am. Alhamdulillah. माशाल्लाह. हम में से कितने मुसलमान हैं जो हम जानते हैं कि नमाज हमारे पर फर्ज है, और हम फजर की नमाज में बड़ी आराम से उठकर मस्जिद जाने वाले हम हजरात जो है मस्जिद जाते हैं. I'm not asking you specifically, but just think about this. Every Muslim knows कि जो एक काफिर और मुसलमान में जो फर्क बताया गया वो नमाज का फर्क बताया गया. हर वो काम जो मुसलमान करता है वो काफिर भी करता है, जो काफिर करता है मुसलमान भी कर सकता है. हाउएवर जो डिस्टिंक्शन, जो डिफरेंस है वो नमाज का है. बट ऑनेस्टली हम जब फजर की नमाज में जाते हैं, हमारी मसाजिद का क्या हाल होता है? सो नोइंग इज वन थिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इज अनदर थिंग. Okay, so I know how to get into my best state before a session, but I'm not implementing it. What should I do? Hire a coach, work with a coach who makes sure, who an accountability coach who makes sure that it becomes a habit for you. So for example, those of you who pray on regular basis, have you noticed कि आप अगर रोजाना नमाज मस्जिद जा रहे हैं, कभी आप रास्ते में मगरिब का टाइम हो जाता है और आप गाड़ी में हैं, आप बाइक पर हैं, कहीं ट्रैफिक पर हैं आप, और कहीं करीब में मस्जिद नजर नहीं आ रही है या आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, अंदर से कितनी बेचैनी हो रही होती है उस वक्त, मेरी नमाज ना मिस हो जाए. Have you had that experience? Why is that? Have you ever thought about this? Why does this happen? Like there are people, जो अजान हो रही है मस्जिद के बिल्कुल बराबर में उसकी दुकान होगी और अजान हो रही होगी, एंड they'll not leave their shop, and होती रहे जमात अंदर हो रही है तो क्या हुआ, उसका भी धंधे का टाइम है, भी दुकान पे बड़ा रश हुआ है, वो मस्जिद से तक नहीं जाएगा, चंद कदम निकल के वो दुकान से मस्जिद तक नहीं जाता. मगर एक आदमी जो नमाज पढ़ रहा है रेगुलरली, वो अगर रास्ते में कहीं ट्रैफिक में है तो वो गाड़ी को रिस्की तौर पे पार्क करके और नमाज के लिए भागने की कोशिश करता है. क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? एंड मैं ईमान के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहा हूं. व्हाई डज वन पर्सन डू इट, another person does not care? It is a habit. Yes, that's right. So वो हैबिट कैसे बनी है? कोई भी हैबिट हमारी जो बनती है वो कैसे बनती है? कमिटमेंट. ओके. Practice, repeating, repetition, 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 repetition until it becomes second nature to you. Okay, so that's what you need to learn to get into the right state before you meet your client. Before you come across a client, before you meet a client, you need to get into your best state. So you can give your best to the client, so they can get your best, whatever that may be. Okay, your best will keep getting better with time, but whatever you are capable of at that point, you give your best. Okay, so and when you come across client the very first time,
being in your best state, the first thing that you do is you establish connection with them. You basically, ask about general things, जो general chit chat वाली चीज होती है, the kind of like, okay, so आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, अगर if you're in an online session, किस शहर से आपका ताल्लुक है, जो general chit chat वाली जो चीज होती है, to find some common grounds. NLP के terms में, you build rapport, okay, you match, you mirror what in whatever way you can, so you build that kind of connection. Once you have that connection, you have established a connection, then अब आपके पास कोई शख्स आया है, so you need to find out what is it that they want to elicit their outcomes. NLP की ज़बान में आउटकम है गोल, आज के इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सो आज फरमाइए जी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए. You will find when you work with people, they will have stories about things in their life. मेरे साथ जी ये हो गया तो मेरे साथ ये हो गया. They have all the stories. Now, when you're working as a coach, you need to understand कि आपने कहाँ पर उसकी स्टोरी को रोकना है, कहाँ कितनी आपने उसकी स्टोरी सुननी है, कितनी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है. People think, a lot of times people think that they have to tell you everything in order for you to help them, because they don't know how coaching works. They just know that a coach can help them. They don't know how coaching works. So, but they want to tell you everything because that's what they believe. उन्होंने ये समझा है, उन्होंने ये सीखा है, उनको ये बताया गया है कि जी पूरा जो उनका प्रॉब्लम है वो बचपन का प्रॉब्लम है और उनको माजी की पूरी कहानी सुनानी है, तो वो बैठकर आपको पूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे. Sometimes you need to listen to that ताकि उनकी जिंदगी में जो भी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी थिंकिंग पैटर्न्स है आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें. And once you have enough information and once you have identified those patterns, you don't need to get into the story side of whatever they will be saying. Now, jab it's like, so you find their outcome. So iska jo basic question hota hai NLP mein, ek simple sa question, iske bahut sare questions hote hain. Ek simple sa question jo hota hai, what do you want? That's the first question. Okay, what do you want? Now, a lot of times, a lot of people don't have any idea about what they want. Or sometimes people have very vague ideas about what they want. Countless times मैंने लोगों के साथ कोचिंग सेशंस में एक चीज देखी है, जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ. ओके, कूल, फैंटास्टिक. कौन सा बिजनेस? कोई बिजनेस. कोई बिजनेस के कोई मायने नहीं होते. मैं जी दुनिया में चाहता हूं कुछ करूं. क्या करना चाहते हैं? कुछ. व्हाट इज दैट कुछ? नो आइडिया. ओके. और अक्सर जो आइडियाज होते हैं वो बेसिक चीजें होती है, जी मेरे हमारे फैमिली के अच्छे हालात नहीं थे, फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, अम्मा अब्बा के झगड़े होते थे, वगैरह वगैरह वगैरह. सो आई वॉन्ट कि मैं इतना पैसा कमाऊं, हम लोग घर बना लें और हम यूं कर लें, और इतना मेरे पास पैसा, और मेरे छोटे बहन भाई हैं मैं उनके लिए ये कर दूं, और सारी दुनिया जहान के ख्याल. बट देयर इज नथिंग स्पेसिफिक स्टिल. सो when you come to this question, what do you want? You need to get more and more specific. So sometimes session के सीधे सीधे 40 से 45 मिनट सिर्फ इस सवाल के जवाब को क्लियर करने में निकल जाते हैं. इवन मोर, ऐसा भी हुआ है कि लोग पूरा एक सेशन सिर्फ इस सवाल के जवाब में निकल गए, व्हाट डू यू वांट. क्लाइंट को पता ही नहीं है, उसके जहन में बहुत सारे वेग किस्म के आइडियाज हैं. उसने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रखा है, उसने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रखी है, और उसके जहन में कुछ बड़े सक्सेस के आइडियाज हैं. ओके, आजकल यूट्यूब को देखकर बड़ी चीजें हम दिमाग में आ रही होती हैं, लेकिन they have nothing specific. So it's like this part, this one question, this first thing, eliciting the outcome, इसमें अब दो किस्म की चीजें आती हैं. एक आउटकम है जो आपका ओवरऑल आपके साथ, उसका फर्ज करो वो 3 महीने के लिए कोचिंग ले रहा है, तो उस 3 महीने की कोचिंग में जो आपके साथ उसके 12 सेशंस होने हैं या 6 सेशंस जो भी आपने उसके साथ सेटअप किया है, उसमें क्या क्या चीजें होनी है. एक बिगर आउटकम हो गया.
एंड देन हर इंडिविजुअल सेशन में क्या चीजें होंगी. These are small parts of this. और ये जो छोटे हैं, they all connect to that big outcome, big goal. Does this make sense? यहाँ तक जो मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? Type 1 if it makes sense. If you have a question, you can type that too. So I see there are a number of people on YouTube as well. So I am reading. यहाँ पर काफी सारे लोग हैं. हुमा फाक, कैसी हुमा? Adil, Ariba, Sadia, do answer. Okay, excellent. So somebody's saying, is it similar to begin with an end in mind? Yes, with an end in mind is the term that was used in 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, a very old book. और उससे बहुत पहले Napoleon Hill in his book, The Law of Success, used the term definite chief aim. Okay, knowing your outcome जो है, that's not having a clear, well-defined outcome. NLP में इसकी 5 criteria होते हैं. It's like 5 conditions. We call them well-formedness conditions of outcome. So उसमें से एक चीज जो होती है, it must be stated in positive. It must be initiated and maintained by the person who desires it. The person must have some evidence procedure for knowing, what they will see, hear, feel, that will let you know that they are achieving it. So there are 5 different things. मैंने आपको 3 share किए. So a person has to have a lot of clarity. If it's not there and you start coaching, your coaching will go haphazard. You will not get any results. And you know what? When that happens, the client didn't know what they really wanted. You thought that you understood what the client wants, and you started coaching them, and you ended up spending your time, and they don't get any results, and you wonder where you went wrong. You went wrong on the first step where you did not clarify the outcome. Do you understand? So knowing how to clarify the outcome with a client is one of the key steps. That's what you will be learning when you join my NLP life coach certification training. That's one of the first things that you need to clarify when you're working with clients, knowing exactly what they want. Because if you miss that, okay, so for example, youth, आपके पास कोई आता है and they say, I want to be successful, I want to make a lot of money. And you say, okay, and you start coaching them and you start working with them and, planning out exactly what they can do to make a lot of money. And they start making a lot of money. They say, लेकिन मेरा असल में प्रॉब्लम ये नहीं था, पैसे तो मेरा तो बिजनेस वैसे भी चल रहा था, तो वो तो वहां से मैं पैसे तो बना ही रहा था, उसमें तो मुझे नहीं. असल वजह ये थी कि मेरी फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं थी, और वो तो मेरी अभी भी नहीं है. मैं चाह रहा था मैं पैसे बनाऊं, ताकि मैं सोच रहा था कि उससे मेरी रिस्पेक्ट होगी. सो द रियल थिंग दैट द पर्सन वांटेड वाज टू बी रिस्पेक्टेड बाय द फैमिली, वाज, एंड ही थॉट दैट बाय मेकिंग मोर मनी ही विल हैव रिस्पेक्ट. ही इज मेकिंग मोर मनी, बट ही इज स्टिल नॉट फीलिंग रिस्पेक्टेड, एंड बिकॉज यू डिड नॉट find out what he really wanted, he will say, आपने मेरा वक्त और मेरे पैसे जाया करा दिया. Do you get this? So the first thing when you're working with people is you need to know what their outcome is. And as I said, there are 5 different steps in this, okay, that you need to go through to find what the person wants. Now, this next thing is you need to explore what's preventing them from moving forward to the next step. Now, it's like, just think about already, अगर आपको पता है आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है आपके जहन में, वो बिल्कुल वाज़ेह है, आपको क्लियर है. सो बट व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर? देयर मस्ट बी कोई ना कोई ऐसे चैलेंजेस होंगे, कोई ना कोई ऐसे हर्डल्स होंगे जो कि इंसान को वहां पर मूव करने से, उन चीजों को हासिल करने से रोक रहे हैं. कोई ना कोई चीज तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा. क्या ख्याल है आपका?
What do you think? So a person says, I want to be healthy, I want to have, better health, more energy, but I'm not doing anything about it. कोई ना कोई तो वजह होगी. I want to have, expand my business, but I'm not doing it. कोई ना कोई तो वजह होगी. So you need to find out what's stopping them from doing that. क्या चीज है जो कि इस शख्स को जो ये हासिल करना चाह रहा है अपनी जिंदगी में, जो कुछ ये अचीव करना चाह रहा है, जो कुछ ये अटेन करना चाह रहा है, उस चीज को हासिल करने से इसको रोक रही है. कोई ना कोई चीज तो होगी ऐसी. तो वो क्या चीज है? जनरली स्पीकिंग, अगर आप उसमें जाएंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि दो किस्म की चीजें होती हैं. ओके, एंड अगेन आई एम गिविंग यू अ वेरी जनरलाइज्ड काइंड ऑफ ओवरव्यू यहाँ पे. सो दिस इज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन जो चीजें होती हैं जनरली, दैट एरियाज दैट यू मे वांट टू लुक इनटू आर देयर बिलीव्स and their motivations. Okay, so beliefs or rules that they have put on themselves, the rules they have about their life, the belief system through which they operate, and the criteria of evaluation for them to know if they are going in the right direction or not. Just think about this, कि अगर फर्ज करो आप कहीं जाने के लिए अपने मोबाइल पे आपने जीपीएस सेट किया है, बट जो जीपीएस आपने सेट किया है वो जीपीएस फॉर सम रीजन इज नॉट वर्किंग करेक्टली. You know your destination, you know where you want to go, you are on the path, but the GPS that you are following to get there is giving you wrong direction, and you're following that GPS. Will you be able to get there? No, exactly. यानी ये वाला होता है ना कि जी मैंने जाना है जन्नत, मैं पहुंचना जन्नत है, लेकिन जो जन्नत जाने का रास्ता है वो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और कोई शख्स कहे कि नहीं मैं अपना तरीके से जाऊंगा, मैं अपना रास्ता इख्तियार करूंगा, ओके, विल ही बी एबल टू गेट देयर? डेस्टिनेशन बड़ी क्लियर है, डेस्टिनेशन बड़ी वाजे है, मगर जो जीपीएस है वहां जाने का, जो तरीका उसने इख्तियार किया वो कहीं और ले जा रहा है. डू यू थिंक यू गेट देयर? ओके, सो जब हम it's like when we're working with people, one of the things that we want to find out what's the GPS operating inside their heads. Okay, because sometimes the problem is in that GPS, their internal, okay, thinking process. So they are very clear about what they want to do, but what they're doing is they're using wrong directions. They have wrong setup inside, and they're doing the best they can. They're investing their time, they're investing their energy, they're doing everything they can, yet they are using the wrong criteria here, wrong rules here. Now, as a result, they never reach where they want to go. Okay, so two cheesein, the rules or beliefs or cycle, pseudo logic, or the criteria of evaluation. Okay, these are the two things that you need to look into. So when you work with people, you need to see कि हो क्या रहा है. Remember, there's a client, understand your client. ये कहने को बड़ी आसान बात होती है, अंडरस्टैंड योर क्लाइंट. कभी आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को कभी खोला है, कंप्यूटर को आपने खोला है, कभी अपने मोबाइल फोन को कभी खुला हुआ देखा है? तो ये कुछ नहीं होता है जी, एक छोटा सा उसके ऊपर खाली वो एक बोर्ड होता है इतना पतला सा. कभी उस उतने पतले से बोर्ड को यूं खोलकर आप उसको पढ़ सकते हैं? अगर आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी हुई हो,
एक इंसान के बनाए हुए इतने पतले से बोर्ड को जिसको आप रोज इस्तेमाल करते हैं, आप उसको बगैर सीखे नहीं पढ़ सकते। आप उसको देखें ये क्या चीज है भाई, अजीब अजीब इस पे लाइनें बनी हुई हैं। एंड यू थिंक अल्लाह के बनाए हुए दिमाग को जो है हम ऐसे ही सीख लेंगे, बट ठीक है जी, मैंने इसका किसी की कोचिंग ही तो करानी है, कोई मसला थोड़ी है, ऐसे ही कर लेंगे। That's what you need to learn. That's what you need to understand. So this is the thing. It's like entering into the business of coaching is very easy. Surviving it and then thriving is another game. It's a totally different thing. Okay? Like कोई भी शख्स दुकान तो खोल सकता है ना। कितने लोग हैं आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, ये खाने की दुकान खोल लेंगे। Okay? बट चंद दिन होते हैं और वो दुकान जो है वो बंद हो जाती है। How many of you have seen those kind of things? क्यों? बिकॉज दुकान खोलना बहुत आसान है, दुकान को चलाना, उसको मेंटेन रखना और उसको फिर एक कामयाब बनाना और एक दुकान से दूसरी दुकान बनाना, ये एक बड़ा मुश्किल और डिफरेंट काम है। It requires a different set of skills. So becoming a coach, starting a coaching practice is very easy. But in order for you to really thrive and survive, saying, oh, understanding client, yeah, sure. It's like I'm saying understanding the mobile phone. मुझे क्या है इसमें, एक छोटा सा कैमरा है, ये छोटी सी स्क्रीन है, अभी मैं इसको जस्ट खोल के देख लो, जरा समझ के दिखा दो बगैर पढ़े। सो जब इसको समझना जो है, इसको समझने के लिए भी there is something else that we require. There are some other things that we require. So when you're working with people, okay, that's one of the things that you will be learning in my classes. Okay, and so just to give you an idea, how people think, thinking and there kitni sari cheezein involved hoti hai. So for example, you begin with an end in mind. Just like, oh, it's such a nice thing, you are beginning with an end in mind. Great. Now, once you have that end result, the outcome in mind, a well-defined outcome that you're trying to achieve, there is so much more going on here. So you require some information to achieve that outcome. अब मुझे ये तो मालूम है कि मैंने कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन मेरे जहन में या आपके क्लाइंट के जहन में बिल्कुल वाज़ेह है। वहां तक जाने के लिए कैसे जा सकता है? पैदल जा सकता है, साइकिल पे जा सकता है, गाड़ी में जा सकता है, टैक्सी में जा सकता है, ट्रेन में जा सकता है, जॉगिंग करके जा सकता है, स्केट करके जा सकता है, हवाई जहाज से जा सकता है। क्या क्या ऑप्शंस है उसके पास? घोड़ा गाड़ी में जा सकता है। कौन 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 से उसके पास ऑप्शंस हैं? कौन से ऑप्शंस उसके पास फीजिबल हैं, कौन से नहीं है? पाकिस्तान से कोई शख्स फर्ज करो अफगानिस्तान जाना चाहता है, और वो कौन सी शिप बुक कराएगा कि वो अफगानिस्तान पहुंच जाए? कोई ऐसी शिप है पाकिस्तान से जो कश्ती जो अफगानिस्तान जाती हो? एक शख्स कराची से इस्लामाबाद जाना चाहता है, तो वो इस्लामाबाद जाने के लिए कौन सी बोट में सवार हो? बिल्कुल वाज़ेह है, उसका डेस्टिनेशन उसके जहन में बिल्कुल क्लियर है। It's not available, it's not there. So the first thing, like, you have an outcome, now the client and you need that information. What is the required information that this person needs? This is the reason people don't take action. So they know what they want, but they are not taking any action because they don't have information. अब इसमें multiple चीजें होती हैं. A person doesn't have the information. A person may have the information, but it's not the correct information. The person may have the information, they may have correct information, but they don't know how to implement that information. So the first thing is the information. The second is the criteria of evaluation. So
आई डू हैव सम इंफॉर्मेशन, मैंने गूगल से जल्दी से वो डाउनलोड करके मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले लिया, मैंने किसी दोस्त से पूछ लिया था, उसने मुझे बता दिया था। बट द प्रॉब्लम इज, मैंने जिस दोस्त से पूछा था वो दोस्त जो है, मैंने इट्स लाइक किसी शख्स ने दुकान खोल ली, और जो उसने दुकान खोली किसी दोस्त के मशवरे पे खोली, मगर जो दोस्त था दोस्त ने खुद कभी दुकान नहीं चलाई। दोस्त को कुछ नहीं पता है दुकान के बारे में, दोस्त को कुछ नहीं पता है बिजनेस के बारे में। इन अदर वर्ड्स, दोस्त जो है, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू help us in doing what we want to do. But हमने उस दोस्त की से information लेके and we have started. People will end up making mistakes. So you need, जो मैंने आपसे बात की, evaluation का criteria, you need to know and you need to have a very clear criteria of evaluation. ये बहुत डीप टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है इस पे हमारे तकरीबन 3.5-4 घंटे सिर्फ इस एक टॉपिक पे बात करने लगते हैं। जो क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन, छोटे से अल्फाज आपको नजर आ रहा है, और इस पे काम करने में मेरे जो सेशन मैंने लोगों के साथ किए, सिर्फ एक इस चीज के ऊपर लिटरली मेरे सेशन 5-5 घंटे के लोगों के साथ में। बिकॉज जब आप लाइक वंस यू स्टार्ट ओपनिंग थिंग्स अप, यू फाइंड देयर इज सो मच इन इट। और मैं ये नहीं करता कि मैंने किसी चीज को खोला और मैं I just leave that. When I open it, I want to make sure that I repack this. So ये जो specific चीज होती है, when you're working with people, when you're opening this specific area, this criteria of evaluation, that takes a lot of time. That takes a lot of time. Then after criteria, reasons, okay, support reasons for accepting or rejecting information. ठीक है जी, जो मेरे पास it's like I do have a criteria for evaluating whatever information. On what basis will I accept or reject this information? That's where, जो पिछली अभी मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, the rules that the person has. उसके पास, मैं आपको बाय द वे एक चीज गौर कीजिए, ये जो स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूं, we are talking about how people think. जो थिंकिंग का प्रोसेस है, ये उसके एलिमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बिकॉज आपके पास जो शख्स कोचिंग के लिए आया है, उसकी थिंकिंग को समझने के लिए ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको आपने समझना होगा। जब हम सीख रहे होते हैं तो सीखने में ये सारे एलिमेंट्स आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। यानी मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये देखें, ये बिलीव्स हैं और ये क्राइटेरिया है और ये आउटकम है, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ पर्सन, it's all combined all together. और एक ही जुमले में कहीं पे आप देखेंगे उसके रूल्स आ रहे होंगे और उसी एक ही जुमले के अंदर उसकी क्राइटेरिया भी आ रहा होगा। then it's a different story. यानी इसको समझना एक अलग चीज है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने बैठते हैं तो that requires some skill set, that requires some really good practice. So हमारी जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में यू डेवलप दैट स्किल सेट इन एडिशन टू लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस। जब आप किसी के साथ काम करेंगे, यू डेवलप दैट स्किल सेट सो यू कैन वर्क विद दिस। इट्स अबाउट चेंजिंग अ पर्सन's life. Okay, it doesn't happen just because you have a certificate as a coach. It requires a lot more than just a certificate, a lot more. Okay, एक बात बताओ, आपने कभी गाड़ी आप देखते हो, इतनी बड़ी नजर आ रही है बिल्कुल, कभी जब आप उसका इंजन यू खोलते हो और जब इंजन को देखते हो, समझ में आ जाती है गाड़ी कैसे चल रही है? इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी लर्न दैट, विदाउट लर्निंग कैन यू अंडरस्टैंड अ कार? टाइप yes or no. Just think about this. Then how can we understand a human being just by sitting and talking to them for a few minutes? So जो मिस्टेक एक होती है उस वक्त क्या होती है, we assume कि हमें समझ में आ गया है।
एंड वी अज्यूम, और अपनी अजम्पशन पे हम जब काम करते हैं कभी तुक्का लग भी जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट वर्क। और फिर हम परेशान होते हैं कि यार कोई टेक्निक, तो ये कौन सी टेक्निक सीखूं, तो वो कौन सी टेक्निक काम करेगी। एंड पीपल कीप आस्किंग मी अबाउट टेक्निक्स इन एनएलपी, एंड आई कीप टेलिंग देम इट्स नॉट टेक्निक्स। अगर आप मेरी एनएलपी की प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, मास्टर प्रैक्टिशनर, ये टेक्निक इतना छोटा पार्ट होता है। सो इट्स लाइक 70 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग है, और उसमें 15 मिनट टेक्निक के होते हैं। एंड पीपल आस्क मी फॉर दैट टेक्निक, जो 15 मिनट की टेक्निक है, एंड दे डोंट रियलाइज उस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले देर आर 70 hours of training that they don't want to take. They just want to know the technique, and they think just by applying that technique they'll get the result. It doesn't work that way, my friend. If you want to be a coach, and if you want to be a successful coach, if you're really serious about building a career in coaching, you have to understand this. Okay, it's not about this. It's not about it like if you have a certificate you will be able to do this. सारा सर्टिफिकेट साइड में हो जाता है जब आप क्लाइंट के साथ बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं। ओके, एंड क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिलता, वो हो सकता है आउट ऑफ कर्टेसी, क्योंकि आप उसको टाइम दे रहे हैं, तो आपको एक अच्छा सा फीडबैक, जी बड़ा फायदा हुआ, बड़ा ऐसा हुआ। बट ऑनेस्टली डीप इनसाइड यू ऑल्सो नो कितना फायदा हुआ, एंड क्लाइंट का वापस ना आना इज अ प्रूफ कि उसको कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, अगर उसको फायदा होता वो आपके पास दोबारा आता। यू गेट दिस? यानी आप अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर से फायदा होता है, आप दोबारा बीमार होते हैं तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बिकॉज आपको उससे फायदा हुआ था। If the client is not coming to you, that's because simply they're not getting any results. They may give you a very good feedback and you take a screenshot and put it on Facebook, but that doesn't do anything. It may give your ego a fake boost, an adrenaline rush, but deep inside nothing happens, because you don't still have that skill. That skill takes time to learn. That's what you learn in my class. So it's like after this there are many things. Then it's the assumptions behind what the person is doing. Every one of us lives in a trance. I'm a hypnosis instructor. I teach hypnosis. I've been teaching it for over 25 years. मेरी जो डेफिनेशन है हिप्नोसिस की बड़ी सिंपल सी है। हिप्नोसिस की बहुत बहुत सारी डेफिनेशंस है, मेरी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी है। हर वो बात, हर वो आइडिया, हर वो नोशन जिस चीज को हमने बगैर क्वेश्चन के एक्सेप्ट किया, अच्छी या बुरी, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, वो चीज हिप्नोसिस है। वो एक हिप्नोटिक इफेक्ट रखती है। सो वो अजम्पशंस जिनके थ्रू मैं और आप काम कर रहे हैं, वो बेसिकली वो हिप्नोटिक ट्रांस है जिसमें मैं और आप हम सब रह रहे होते हैं। आपके आने वाला जो क्लाइंट है वो किस ट्रांस में रह रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना, और फिर उस ट्रांस से उसको बाहर निकाल के एक ऐसा ट्रांस उसको देना जो उसके लिए वर्केबल हो, ये दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। So you don't, it's not that once you bring them out of a trance then they'll be out of trance, but they are living in a trance. वो ट्रांस जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो ट्रांस जिसकी वजह से वो स्टक है, you bring them out of that trance and then you send them give them a better trance in which their life gets better, in which they are able to do things better. That creating that trance is a skill. It takes time. Okay? It's not something that you learn in 5 hours or 10 hours. It takes time. It takes time. It takes time. Okay. So मगर फर्स्ट चीज क्या होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए, यू नीड टू नो दैट यू आर लर्निंग द राइट थिंग, एंड वंस यू नो दैट यू आर लर्निंग द राइट थिंग, एंड देन आप उसको जब इंप्लीमेंट करते हैं, देन यू गेट एक्सपीरियंस, यू गेट रिजल्ट्स। ओके, देन ये सारी चीजें मिलकर एक चीज बनती है, और वो एनएलपी की पहली प्रीसपोजिशन है।
जिसे हम यहाँ पे कहते हैं परसेप्चुअल मैप ऑफ द वर्ल्ड। एनएलपी का जो बिल्कुल पहला प्रिंसिपल है वो ये है दैट परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। और दूसरा प्रिंसिपल जो ये है वो ये है कि हम सब अपनी अपनी परसेप्शंस के मुताबिक दुनिया में रहते हैं, और हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारी परसेप्शंस के मुताबिक चल रहा होता है। सो मैं जो कह रहा हूँ कि वो ट्रांस में रह रहा है तो वो एक अपनी परसेप्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है, और वो अगर उसको लिमिट कर रहा है, वो उसको रोक रहा है, सो हम एज कोचेज, हमारा जो काम है इज टू हेल्प देम गेट आउट ऑफ दैट एंड गिव देम अ मोर यूजफुल, you know, perceptual world, so they start living in a more useful way. Does this make sense, everyone? Okay. So it's good, good, good. So I see there are people making sense. Okay. Are you finding it useful? Are you, getting some value out of this? कई ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर हैं, लेकिन एक सन्नाटा सा होता है ना, जब लाइक व्हेन पीपल आर क्वाइट, तो इसलिए मुझे पता नहीं चलता। इसलिए लेकिन अगर मैं सबको अनम्यूट कर दूं तो फिर इतने सारे लोग अनम्यूट हो जाते हैं एक साथ, तो फिर किसी को किसी की समझ भी नहीं आती। सो इट्स यहाँ तक की जो बात है, ये आपको अगर समझ में आई है, सो ग्रेट। मैं इसके अंदर लाइक वी कैन गो मच फर्दर इन दिस। इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इन स्पेसिफिक एरियाज के लिए देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अभी इतना टाइम नहीं है, यानी मेरी इस प्रेजेंटेशन में कोई तकरीबन 3 स्लाइड्स हैं जो कि इस स्पेसिफिक टॉपिक को मजीद बहुत तफसील से खोलती हैं। एंड आई एम राइट नाउ एज आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम जस्ट स्किपिंग दो स्लाइड्स, ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो वरना ये जो चीज़ें, ये बहुत डिटेल की चीज़ें हैं। Okay, this is not something कि आप खाली सो बैठे। So when you join my course, when you join my class, you will learn all of these things. Okay, you will learn what is behind all of this. Okay, so हम जो बात कर रहे थे, client outcome and then exploring what's preventing them. So it's like this is about understanding. This is about understanding them. Okay, so you ask questions to help them explore their own resources. एनएलपी में हम एक प्रीसपोजिशन है, एक हमारा प्रिंसिपल एनएलपी का जिसके थ्रू हम काम करते हैं, और वो ये कि देयर इज नो सच थिंग एज एन अनरिसोर्सफुल पर्सन, it's just that sometimes we operate from an unresourceful state of mind and body. हर वो रिसोर्स जो मुझे और आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए चाहिए, वो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके अंदर रखा हुआ है। मैंने अपने पिछले सेशन में भी इसकी एक आई यूज दैट एग्जांपल, इट मेक्स मोर सेंस कि अगर हम दोज ऑफ अस हु आर पेरेंट्स, और जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप जब हमें वो स्कूल भेजते थे, या हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, सो हम उनको स्कूल भेजने से पहले हम उनको हर चीज देते हैं। हम उनको बैग देते हैं, उनको किताबें देते हैं, कॉपियां देते हैं, पेंसिल, कलर पेंसिल, शार्पनर, स्केल, and then we give them a lunch box and a water bottle, and then we give them some pocket money as well. We want to make sure कि मेरा बच्चा जो चंद घंटे के लिए मुझसे दूर जा रहा है, उसका जो चंद घंटे का स्कूल का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अच्छा और खैरियत से गुजरे। ओके, वी ऑल डू दैट। हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ किया। जनरली दिस इज हाउ ह्यूमंस डू, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम किस कल्चर से ताल्लुक रखते हो, किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, किस माशरे से ताल्लुक रखते हो, किस किस सोशल स्टेटस से ताल्लुक रखते हो, हम अपने अपने तौर पे जो कर सकते हैं हम वो करते हैं। ट्रू और फॉल्स? What do you think? Type T if you think it's true. Type false if you think it is not true.
So I get टी 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 something reminds me, कराची का जमाना याद आ गया. So when you say, you know, when you are sending your child, आप इतना प्रिपेयर करें. जस्ट सोचो उस रब ने जब मुझे और आपको यहाँ इस दुनिया में भेजा, ओके, 50 60 साल 70 साल, वो जानता है जितने अरसे के लिए उसने भेजा है, उसने ऐसे ही भेज दिया होगा. यानी हम अपने बच्चे को चंद घंटे के लिए भेजते हैं तो पूरा तैयार करके भेजते हैं. और उसने जिसने हमें, जो हमारी माँ से कई गुना ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा वो मोहब्बत करने वाला, उसने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा. उसने हमारे अंदर कुछ नहीं रखा हो, ऐसे भेज दिया होगा आपके ख्याल में. सो वो मेरे और आपके अंदर है. द प्रॉब्लम है जिसमें, यू नो, लाइक बच्चे को अम्मा ने किताब, वो टिफिन दिया था, वो टिफिन जो है, बच्चा जब भागा दौड़ा स्कूल में तो वो बैग के जो है किताबों के नीचे हो गया. अब बच्चा जब स्कूल जाता है और लंच का टाइम आता है, वो खोलता है और उसको देखता है अम्मा ने आज लंच ही नहीं दिया, और वो भूखा रह जाता है. लेकिन अगर बच्चा अपनी किताबें उठाता तो देखता है वो लंच बॉक्स उस किताबों के नीचे वहीं मौजूद था. बिल्कुल इसी तरह जो रिसोर्सेज मुझे और आपको चाहिए वो मेरे और आपके अंदर है. ओके, बिलीफ सिस्टम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. there's a lot more. So वो जो चीज जो मेरे और आपके अंदर है, उसको निकालना, उसको एक्सप्लोर करना, that's what coaching does. That's what your job as a coach is. So if you come to me as a client, you know, my job is to explore those things from you. कभी, you know, it's like you have it all in you, but उसके ऊपर, you know, सोचों का एक जाल लग गया है. एंड बिकॉज ऑफ वो जो सोचों का एक जाल लग गया है इसके ऊपर, तो वो जो ट्रुथ है आपका, द रियल एसेंस ऑफ हु यू रियली आर, वो सारे रिसोर्सेज वो गायब हो गए, वो हाइड हो गए. कभी आपके साथ अगर ऐसे एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे हुए थे, चश्मा लगाया था आपने, जैसे ही आप गाड़ी से उतरे तो सडनली चश्मे के ऊपर फॉग आ गई. अब जब वो फॉग आई तो आपका विजन ब्लर हो गया. तो जो उस वक्त विजन ब्लर होता है, अगर कोई शख्स ये समझे कि सब कुछ धुंधला है और इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि सब धुंधला हो गया है, तो ये उसकी मिस्टेक होगी. So somebody has made a comment. I agree with the resource. However, some people are more blessed. That's a wrong idea. आप अल्लाह को मुनसिफ मानते हैं और आप कहते हैं उसको ज्यादा देता है, इसको कम दिया है. अल्लाह ने उसमें कुछ और दिया है, मुझ में कुछ और दिया है. प्रॉब्लम ये होती है कि जब जो मुझ में दिया है मैं उसको देखने और उसको ऑप्टिमाइज करने के बजाय जो उसको दिया है उसको मैं ऑप्टिमाइज करने की या उसको हासिल करने की कोशिश करूं. दैट्स वेयर वी गेट इन ट्रबल. हर, यू नो, इस गाड़ी का जो हर पुर्जा होता है उसकी अपनी अपनी यूटिलिटी है. स्टेयरिंग का अपना काम है, व्हील्स का अपना काम है, टायर्स का अपना काम है, इंजन के हर हर पार्ट का अपना काम है. एक छोटा सा प्लग अगर वो फ्यूज हो जाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती. हेडलाइट्स का अपना काम है, इंडिकेटर्स का अपना काम है, गियर का अपना काम है, ब्रेक का अपना काम है. एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूटिलिटी. प्रॉब्लम जो होगी वो ये होगी अगर, यू नो, स्टेयरिंग बोले यार मुझे तो व्हील की जगह होना था, और व्हील बोले मुझे तो स्टेयरिंग की जगह होना चाहिए था, क्योंकि वो देखो उसको हर वक्त जो है मालिक के हाथ में रहता है तो वो उसको यूं. ओके, एंड imagine if a car does that. So rather than realizing that we have a different set of potential, we start thinking, oh, I don't have potential, they have potential. That's, ये जब भी मैंने आपसे बात करी ना, थिंकिंग के हमारे जो रॉन्ग जीपीएस एंड रॉन्ग, यू नो, लॉजिक्स, ये उसका नतीजा होता है. वी थिंक ओ उसमें है और मुझ में नहीं है, या किसी में ज्यादा है किसी में कम है. दैट्स अ मिस्टेक. Then
You help clients design an action plan. Now you have a coaching session, or a coaching session may you know, it's like you have explored all the resources, you have clarified all the limitations. Now what? I have everything, but I'm still not moving forward. What do I do now? You need to create an action plan. और वो action plan जो है, this will be according to the person in front of you. So person, हर एक की उसकी जो भी कंडीशन, करंट जिंदगी की सिचुएशन चल रही है, उसकी सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट प्लान होगा. जैसे आपने देखा होगा, डॉक्टर होता है, एक ही दवा मुख्तलिफ मरीजों को लिखता है, लेकिन एक को कहता है दिन में 1 बार खानी है, दूसरे को कहता है दिन में 3 बार खानी है. किसी को कहता है कि सुबह में और शाम में खानी है, किसी को कहता है सुबह दोपहर शाम खानी है. ओके, एक ही एग्जैक्ट दवा है, डोजेस डिफरेंट है. क्यों? बिकॉज हर मरीज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. सो जो आपने, once you have cleared all the things, you have activated resources in people. और याद रखो, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, मैं सब कॉन्वर्जेशन की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप उसके ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसको यूं आंखें बंद करके बिठाया है और उसके दिमाग को आप रीप्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग गलतफहमी में रहते हैं कि दिमाग को कोई रीप्रोग्राम किया जाएगा, उसका नतीजा होगा. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. आपने देखे ऐसे लोग कभी कि हम एक बाबे के पास गए, कुछ दिन के बाद दूसरे बाबे के पास गए, कुछ दिन के बाद तीसरे बाबे के पास, लाइक दिस कीप रनिंग टू डिफरेंट प्लेसेस. हैव यू सीन दोस काइंड ऑफ थिंग? ट्रेनिंग में इस तरह की जो चीज होती है, वो ये होता है कि वो एक ट्रेनिंग में गए, वहां पे जो सीखा था वहां से हासिल नहीं किया, किसी दूसरी पे गए, वहां से सीखा, लाइक एंड दे जस्ट कीप ऑन jumping. That's what it happens. So can I know the difference between counseling and coaching? I suggest it's search Google for such questions. You'll find answers, more detailed answers. We have same physical bodies. Islam gave me same duties, so we are same. We don't have same physical bodies. We have different physical bodies. We have different resources according to what we need. Allah has, it's like, अगर first करो, if you have children, आपका एक बच्चा जो है यूनिवर्सिटी जाता है और एक बच्चा प्राइमरी स्कूल जाता है, और आप अपने सारे बच्चों से इक्वली मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाला बच्चा है, आप उसको गाड़ी मोटरसाइकिल दिलाते हैं ताकि उसके लिए आना जाना आसान हो, जबकि आपका जो नर्सरी वाला बच्चा है, उसको आप खुद छोड़कर आते हैं या उसके लिए आप वैन लगाते हैं, बिकॉज उसकी नीड के हिसाब से आप उसको देते हैं. यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को आप महीने का खर्चा भी देंगे कि जी ठीक है, इसको पेट्रोल का भी खर्चा होता है, इसकी यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ कभी खाने पीने के लिए भी उसका है. जो स्कूल प्राइमरी वाला जो बच्चा है, नर्सरी वाला बच्चा है, आप उसको वो पॉकेट मनी नहीं देंगे, बिकॉज दैट्स दे नीड अ डिफरेंट थिंग. सिमिलरली अल्लाह ताला जानता है कि कामरान सुल्तान को ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस मुकाम पर, वो उसको वो देता है. और अल्लाह ताला जानता है कि किसी दूसरे को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको वो देता है. प्रॉब्लम ये होगी और ये होती है कि जब हम बजाय ये देखने के कि मेरी क्या ज़रूरत और मेरा क्या नीड है, कोई शख्स ये देखे कि फलाने के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, that's when they get into trouble. So I hope that gives you answer. So then, so इस step में to do is you need to create an action plan which is for that person, which is more according to that person. अगर आप जिम जाते हैं, आपने अगर कोई जिम वाली कोई एप्स इस किस्म की है किसी उसके साथ, सो हर शख्स जो जिम में आ रहा है, सबके वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही जिस्म है, वही लेकिन सबकी बॉडी टाइप्स डिफरेंट होंगी, सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट होंगी, एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, उनकी डाइट और उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे. एक आदमी जो है जिम जा रहा है, सो दे कैन बिकम लाइक
प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, एक आदमी जिम जा रहा है बिकॉज वो बीमार है और उसको डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करने के लिए, एक आदमी जिम इसलिए जा रहा है बिकॉज ही और शी जस्ट वांट्स टू बी फिट, कोई शख्स इसलिए जा रहा है बिकॉज उसने अपना अपना वजन कम करना है, और कोई शख्स इसलिए जा रहा है बिकॉज वो अपने आप को ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव बनाना चाहता है. सो डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट गोल्स गोइंग इन द सेम प्लेस, सेम जिम. अब फर्स्ट करो, जो जिम का जो ट्रेनर है वो जब प्लान्स बनाएगा, वो जो एक्शन प्लान्स देगा, वो जो एक्सरसाइज प्लान होगा, वो जो डाइट प्लान होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द पर्सन and their goals and objectives. So when you're working with someone in coaching, that's what you do. You see कि इसके जो भी objectives हमने set किए हैं, जो long term है और जो मेरे आज के सेशन से जो छोटे छोटे हुए, so ये सारी चीजें इसके लिए what would be the action plan that will help the person get to attain those objectives, achieve those objectives. Okay, so you need to set those plans, और ये setting those plans is another set of skill. It's something, पहली चीज ये कि आपको अपने लिए you need to have a plan for yourself. Those of you who are coaches, I'm sure you have some plans for your coaching. You have a clear vision for your coaching. If you're already coaching, I'm sure you do have that. So you have a vision for your coaching. You have decided how much you are going to coach, when you are going to coach, who you are going to coach, who your ideal clients will be, what age bracket, what kind of issues you will work with, how many days you are going to work, where you will work, whether you will do individual coaching or group coaching. I'm sure you know all of those things if you're already a coach. Okay, and you have a plan for putting all of those things into action. So aapka jo bhi vision hai for establishing your business and your practice as a coach, I'm sure you are very clear about that and you have planned for that. If not, then you need to learn that. If not, then you need to plan that. Okay, so setting a plan, a goal plan, and designing an action plan for this, that's the next step. Now, once you have this, okay, now just because I have a plan, does that mean things will happen for me? The answer is no. Once you have a plan, you have to implement it. You have to take action. And you have to, it's like अंग्रेजी की कहावत आपने सुनी, it's a cinch by the inch and hard by the yard. So you have to take those small steps. And taking those small steps will help you get to that ultimate thing. Now, all of these things is what you learn when you join my life coach or master life coach online program or my upcoming NLP coach certification training. These are all the things that you will be learning. Okay, so as I said, ये सारी जो चीजें हैं, मैं अगर इस जो स्लाइड्स मैंने अभी खोली हैं, अगर मैं जाऊं इस पे से हर एक के ऊपर आगे मेरे पास कम से कम 2-3 स्लाइड्स हैं. And then there are exercises to give you an experience of what it is like to work at this level with only for all of these things. So ये चीजें जो हैं, देखो, it's not something कि खाली हम इसको सुन के सीख सके. यानी सोचो ना, क्या हम स्विमिंग भी एक स्किल है ना, जैसे कोचिंग में आप स्किल, स्विमिंग जो है, क्या किसी को लेक्चर सुन के हम स्विमिंग सीख सकते हैं? क्या हम किसी से स्विमिंग सीखना पसंद करेंगे जिसने लेक्चर सुन के स्विमिंग सीखी हुई हो? किताब पढ़ के स्विमिंग सीख सकते हैं हम? ओलंपिक्स के मैंने गोल्ड मेडलिस्ट को स्विम करते देखने के बाद स्विमिंग आ जाएगी हमें? कैसे आएगी स्विमिंग? what do you think? क्या ख्याल है आपका? with practice. So do you think उसको पहले सीखना होगा या खाली बस प्रैक्टिस डायरेक्टली शुरू करना है?
यानी डॉक्टर है, कहते हैं मैंने वैसे तो मेडिसिन वगैरह नहीं पढ़ी मगर मैं प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी थी। मेरे इनके मेरे अब्बा डॉक्टर, मेरे दादा डॉक्टर, मेरे ससुर डॉक्टर, तो मैं भी डॉक्टर, मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। डू यू थिंक दैट वुड बी द राइट थिंग? विल यू गो टू अ डॉक्टर व्हिच से जी मेरा बाप डॉक्टर, मेरा दादा डॉक्टर, तो लिहाजा मैं भी डॉक्टर? Would you go? So the first thing, the first step is to learn and then implement. Learning is the first step, and not just learning properly. Okay. You learn and then you implement that, and then you practice that. And throughout that process, you need support, you need coaching. You constantly need support. And इसीलिए मेरा जो program है उसके अंदर for 6 months, the program will end in 4 weeks. You will have all the knowledge, skills. Implementing that will take another, at least 6 months. So you get good with that. So we have monthly coaching calls after the program. So every month, we meet on Zoom and, we work on whatever issues you may be experiencing. We have group coaching calls. Plus, I have created WhatsApp groups for my students. If you have any question on day-to-day basis, you can ask me those questions. I will be there. I am there. मेरे बहुत सारे students हैं मेरे already. काफी सारे WhatsApp के हर course के मेरे WhatsApp पे groups हैं. There are people right now. इस वक्त बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. And they keep posting their questions and I keep answering them. Even people who have taken courses with me 20 years ago are there. They ask and I answer. Okay. I don't know if you can see. अबीर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सहरिश आपको नजर आ रही हैं, ये खालिद महमूद आपको नजर आ रहे हैं, मुमताज आपको नजर आ रहे हैं, सईद नजर आ रहे हैं, हाशिम साद हाशमी नजर आ रहे हैं, एंड सूफिया चुगताई आपको नजर आ रही हैं. All of these people, by the way, they are some of the people जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे, I guess you can see them. It's like कैमरे इनके बंद हैं, शर्माते हैं थोड़ा सा, it's okay. Okay, but all of these people, they are in some of those groups. जुल्करनैन है यहाँ पे, मलिक जुल्करनैन हर रोज मुझसे कुछ ना कुछ सवाल कर रहे होते हैं. Okay, but and Dr. Sarvat hai. Okay, she recently completed. She's still like our program children. So there are people, and they keep on asking me, and that's my job, because I know ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने खाली कोई सर्टिफिकेट आ गया तो आपके पास स्किल आ गई. To be certified is one thing, to be skilled is another thing. Certification बहुत आसानी से मिल जाती है. As I said, यहाँ पे अमेरिका में there are hundreds, अगर आप जाए ना गूगल पे सर्च करो, there are hundreds of institutions offering, and these are all private businesses. Remember that. All of these are private businesses. These are not government recognized agencies, whatever names they may have. These are all private businesses. Okay, so ये जो सारे जितने भी programs हैं, okay, these are all, these are the things that you learn. Then, you need to get your client's commitment to take specific actions. And that's where, you may work as an accountability coach. You need to, make sure that they are taking action. So you do follow up on that. And that follow up, until जो आपने goal set किया था, you are able to achieve that goal. Okay, so Nasir is saying, inshallah, I have one project for 1 year. After that, I will come. There is not a single person in my 25 years of my experience who has made this kind of statement or has ever come. Ever. I've never seen, and I've worked with thousands of people, and I've heard this statement or some form of this statement. Okay. I have never seen a person. People who really want to do something, they just do it. People who don't will have these kind of things. Inshallah. Okay. So, and as far as fading up a question, my friend, try your best.
एनएलपी कोच और लाइफ कोच कोर्स में डिफरेंस क्या है? Oh, so NLP मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं समीरा, दे आर ऑल बेस्ड ऑन एनएलपी. ओके, सो जो मेरा अभी एनएलपी को जिस प्रोग्राम के मैं हवाले से इस वक्त बात कर रहा हूँ, कोचिंग नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू माय कोर्स, बट इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद, प्लीज आस्क. मैं सिर्फ लोगों को एक चीज कहता हूँ कि देखो, जो भी काम करो उसको सीख कर करो. आई एम नॉट सेइंग कि मुझसे ही सीखो. बहुत सारे लोग हैं दुनिया में इस वक्त कर रहे हैं. सीखो, कहीं से भी सीखो. आपको कोई कोई ट्रेनर अच्छा लगता है, किसी की बात समझ में, गो एंड लर्न. इन्वेस्ट इन योर लर्निंग. इस वक्त हमें सीखने की, हमें हमें जो है ना, लर्निंग की जरूरत है. No, my Alok, my courses are not ICF approved. ICF is just another business organization. Okay, and it makes no sense. It's like मैं अपने ICF की certification हूँ. For me, it doesn't mean anything. So, it's like you learn from wherever you can. हमें तो हुक्म क्या है? इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक. ये तो नहीं है ना, जब डिग्री हासिल आ जाए उसके बाद छोड़ दो. इट्स अ कांस्टेंट नेवर एंडिंग. मैंने मुझे याद नहीं पता नहीं कितने कोर्सेज मैंने अटेंड किए, कितनी कितनी जगहों पे. मैंने कितने सारे कोर्सेज हैं जिसका मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है. इनफैक्ट मैंने ज्यादा कोर्सेज ऐसे अटेंड किए जिसका मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है. ओके, चंद कोर्सेज ऐसे हैं जिनके मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं. ओके, मैंने शायद आपको पहले दिखाया था. लेट मी जस्ट इट्स लाइक इफ यू हैव बीन टू माय ऑफिस इन पाकिस्तान, these are some of the certificates जो मेरे पास ऑफिस में पाकिस्तान में टंगे हुए हैं. And there was a time when I did not, it's like मेरे सारे सर्टिफिकेट्स जो थे ना वो कहीं रखे हुए थे अलमारी के अंदर. ओके, फिर मैंने ऑफिस रेनोवेट किया, तो फिर रेनोवेट किया तो हमने इनको ऑफिस को, इनको सारे फ्रेम करा के और ऑफिस में टांग लिया. I have these. For me it really doesn't make much of a difference. Okay, and मैंने पाकिस्तान में 21 साल प्रैक्टिस की है. No one ever asked me about my certificates, because what really matters is not how many certificates I have. What really matters is मेरे पास जो आने वाले लोग हैं उनको मुझसे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर उनको फायदा नहीं हो रहा, none of my certificates will matter. और अगर उनको फायदा हो रहा है, so certificates are not required. Okay, so practicing the right thing and then applying them in the right way. So those of you who have been to my class, this is my class. ये मेरी क्लास की तस्वीर है पाकिस्तान में जो मेरा इंस्टीट्यूट है. So anything else? I worked on me to improve my behavior and life. Excellent, fantastic, जबरदस्त, बहुत अच्छा. प्रैक्टिस सर, आप पाकिस्तान में क्लासेस अब नहीं लेते. मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो फिर क्लासेस भी लूँगा. मैं जब पाकिस्तान आऊँगा नहीं तो फिर क्लासेस कैसे लूँगा. फिलहाल तो मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा हूँ, और ना ही मैं पाकिस्तान में हूँ, और ना ही मेरा फिलहाल कोई प्लान है आने का. सो फिलहाल तो मेरी कोई क्लास नहीं है. सो anything else? What is your strategy for reading books? My strategy for reading books, I see which book I want to read and then start reading it. It's very simple. Okay, I don't look at the price of the book. I see if I want to read it. मैंने इंतहाई कड़की के ज़माने में इंतहाई महंगी किताबें खरीदी हैं. मैंने एक दफ़ा एक फेसबुक पे अपनी एक स्टोरी लिखी थी, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी. आई डोंट मेक फेक स्टोरीज, इट्स ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस. मेनी इयर्स अगो, आई थिंक प्रॉबली 94 की बात होगी, या 95 96 की शायद. इट्स बीन मेनी इयर्स, मुझे हिस्टोरिकली याद नहीं, बट रमज़ान के दिन थे, आखिरी वो था, लाइक आज आखिरी दिन है एंड देन कल छुट्टी है, परसों ईद है, वो वाला चीज़ थी. मैं एक बुक स्टोर पे गया, I saw a book, और वो किताब देखी है, और उसकी कीमत जो थी इस वक्त तकरीबन शायद 750 रुपए थी. It was a huge amount. मेरे पास टोटल 1000 रुपए थे. सो ईद आ रही थी,
मेरे भांजे थे छोटे छोटे एंड आई जस्ट लाइक उनको ईदी देनी है, एंड देन छोटी बहनें भी थी, उनको भी ईदी देनी थी, एंड आई थॉट यार किताब ले लूं, एंड देन नहीं नहीं ले रहे, ईदी देनी है, छोड़ के मैं आ गया। और आया हूं ना सारे रास्ते, मेरा दिल नहीं हो रहा यार, किताब नहीं खरीद सका। आई केम बैक, व्हेन आई केम बैक, मैंने आके मेरी छोटी बहन को बताया ना, आई वाज लाइक सो पैशनेट अबाउट द बुक, इट्स लाइक यार किताब देखिए सो नाइस, मैं वो लेना चाहता हूँ, बट ईदी देनी है। मेरी बहन ने मुझसे कहा भैया जाओ तुम ले लो किताब, तुम ईदी फिर बाद में दे देना आपको। मुझे तो ये पर लग गया ना, मैं उसी बात दौड़ा, एंड क्योंकि रमजान के दिन थे तो वो अफ्तार के बाद भी दुकानें खुली होती थी, मैं पौड़ा दौड़ा वहां जाके, मैंने वो किताब ली एंड आ गया, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग। उस किताब में से आई लर्न सम थिंग्स जिनको मैंने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया, एंड ओवर इयर्स आई थिंक, एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं है अंदाजा, बट कम अज कम मैंने 30 से 40 लाख रुपए उस एक किताब में से जो कुछ चीजें सीखी थी उनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके कमाए, उस एक किताब से। सो उस वक्त अगर मैं सोचता नहीं बहुत महंगी है, आइंदा इंशाल्लाह अगली बार लूंगा, अगले महीने पैसे होंगे ना फिर लूंगा, आई वुड हैव नेवर डन इट, समथिंग एल्स वुड हैव कम, and I wouldn't be telling you this story today. Uh, can you share a book name? Yes. Go to amazon.com and search book on the subject you want, and you will find many book names. Okay. माशाल्लाह सर आप हमारे आई एम सॉरी, मुझे रोमन पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, और उर्दू उससे भी ज्यादा होती है, और अंग्रेजी आती नहीं है। How to select a book for reading? That depends. It's like, look, man, you're asking wrong questions, because if you're selecting book according to my criteria may not be applicable for you. You're looking in the wrong way. आपने मुझे कई बार सवाल आपने इस चीज के ऊपर किया है. By learning how I select a book doesn't mean that you will have the, it's like आप जिस लेवल पर हो, जिस तरह की चीजें आपको पढ़नी है, आपका अपना ऑब्जेक्टिव देखो क्या है. अगर आप क्लास 1 में हो और आप क्लास 10th की किताबें पढ़ना शुरू कर दो, समझ में आ जाएंगी आपको. जो क्लास 10th का बच्चा होता है वो डिफरेंट अंदाज से किताबें सेलेक्ट करता है, जो क्लास 1 का होता है वो डिफरेंट अंदाज से. देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. This is where a lot of people make mistakes. You keep asking me this same question again and again, and I keep repeating and I telling you, somehow आपको शायद अभी तक समझ में नहीं आई. I think he's asking for the particular book you purchased. I have bought thousands of books, thousands, and I have listened to thousands of audiobooks. जब से मैं यहाँ अमेरिका आया हूँ, मैंने कम से कम मेरा रोजाना का तकरीबन इस वक्त कुछ मसरूफियत ज्यादा होने की वजह से 1.5 से 2 घंटे आई लिसन टू सम ऑडियो बुक, नॉट समथिंग ऑन यूट्यूब. मेरी साल में तकरीबन 300 घंटे ऑडियो बुक्स सुनने के होते हैं. That's average. So I'm listening to some audiobook almost every day. किसी किसी दिन मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, but I'm listening to something. When I'm driving, I'm listening. When I'm free, I'm listening. When I'm walking, I go out for a walk, I'm listening to something. I go to drop my children or pick my children, I'm listening. I'm going for groceries, I'm listening to something. I'm coming back from groceries, I'm listening to something. This is how it works for me. So I've spent literally thousands of hours of, in listening to different audiobooks on many different topics. जी समीरा, जरूर आपको इजाजत है. इट्स लाइक लोग बगैर इजाजत के जा सकते हैं, मुझे कोई तो नहीं है. आई एम हियर अंटिल if anybody has any answers. So Dr. Sarvat says just guide about some books regarding NLP and life coaching. Dr. साहब आपके लिए तो अभी जो होम स्टडी कोर्स है, go watch that. Okay, finish it first.
It's like हमने वो finish नहीं किया, हम दूसरा कोई पकड़ लें. Don't do that. Many years ago, I think it was Tom Peters का मैंने seminar देखा था, and he said, Tom Peters, by the way, In Search of Excellence, इसने किताब लिखी थी back in 1980s. So he wrote in that book, the problem with today's organizations is before they learn a management theory, before they have implemented it, they start looking for the next management theory. And individual basis pe I've seen this. So people learn something, and before they have actually implemented it, practiced it, they start looking for something else. Okay. Basic foundation जब आपकी हो जाए ना इतनी, तो उसके बाद आप build करेंगे तो फिर it will be easy. लेकिन जब तक बेसिक फाउंडेशन आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप उसमें देखेंगे कि जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक फाउंडेशन बन चुकी है. So I involve myself in a lot of other things, other subjects, but I have a solid grounding in one subject. So वो जब तक solid grounding आपकी नहीं है, it's like एक आदमी ग्राउंड फ्लोर अपने घर का बना रहा है और एक आदमी 10वां फ्लोर बना रहा है एक बिल्डिंग का. ग्राउंडिंग अपनी पहले मजबूत कीजिए. How to retain reading habits? Read every day. These gadgets have taken away this thing from our lives. Now it's so easy to play this blame game, है ना? Gadgets हमारा तो वो सुना, हम तो ये gadgets जो है ना ये सब कुछ कर देते हैं. सही, बिल्कुल सही बात है. मैं सिर्फ ये कहता हूँ भाई इंसानों की तरह जियो. okay. गैजेट्स के गुलाम हमें, गैजेट ने हमें बांध के रखा हुआ है. Okay. So thank you very much, everyone. Let me quickly check if there's any question on क्या हमारे घर वाले. This is a question on Facebook. So I'm sorry, not Facebook, YouTube. So my lifestyle. ये आपका नाम क्या है? My lifestyle. It's like I just wonder. सर क्या घर वाली लेडीज ये प्रोग्राम अटेंड कर सकती हैं? एब्सोल्युटली, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर घर वाली लेडीज. सादिया पूछ रही हैं, सर आई एम ट्रस्टेड इन द रिजॉल्व पीपल लाइफ इश्यूज, आई वांट टू कोच देम, देन हाउ टू स्टार्ट, काइंडली टेल मी द फर्स्ट स्टेप. Get coaching, get training. That's the first step for anything. Learn. That's the first step. Some people didn't get anything in their life because of laziness. How to deal with them? Get coaching. Okay. Dekho, a lot of times people send me questions, and the जो question होते हैं वो उस तरह का question होता है उनका, जैसे यही question है जी, ये मसला है, इस मसले के लिए कोई टेक्निक बता दो. Honestly, मेरे पास अगर कोई टेक्निक होती मैं आपको बता. You know what? अगर कोई टेक्निक्स काम करती, you just go type it on Google and a technique will pop up, or on YouTube, and you apply that technique and your problem will be resolved. But you know very well, because I'm sure you have done that, you have tried that and it has not worked. What makes you think कि वो टेक्निक जो आपने YouTube पे सर्च करके सीखी थी, if it is not working, अगर कामरान सुल्तान बताएंगे तो it will work? Because if you are thinking about techniques, you are thinking in the wrong direction. Don't think about that. So if a person is lazy, the question is, what is causing that? What is the mindset this person is operating from? What is the GPS uske zehn mein chal raha hai? What is the belief system jiske तहत वो कर रहा है? What are the habitual thinking patterns उसके चल रहे हैं? Until you don't get all of that, आप उसको कोई टेक्निक लगाएं. ये like किसी का अगर फर्ज करो जख्म हो गया है, हमने कहा बैंडेड लगा दो बस, और वो बैंडेड वाली कोचिंग जो होती है, unfortunately it doesn't work. How to coach lazy people? I hope you got that answer. And so I'm checking, by the way, YouTube पे जो questions हैं. I am trusted. Okay.
So I answered the question, how to coach lazy people. I hope you got all the answers. So I think this is good for today. If you have any questions, you can send me a WhatsApp message. And if you have any questions about my upcoming program, check my website. मैंने आपके साथ link share किया था already. Okay, do check that. उस पे you will find all the details. Okay, this is first-institute.com. I'll share that on my YouTube channel as well. Just in case if you are watching it on YouTube, you'll find the link. It is there, and you can check my website. यहाँ पे आपको सारी information मिल जाएगी. So मैंने YouTube पे I pinned that, and thank you everyone for joining me. मैं इस सिलसिले में I'll not be doing another program, another introductory session. कोई question किसी के ज़हन में हो, you can always send me a WhatsApp message and I'll answer that. Okay.